flexor pollicis longus, flexor pollicis brevis, and then extensor digitorum longus, peroneus tertius, extensor digitorum longus. What you can guess from it, that we have got it in the extensor compartment. Digitorum, it's going towards the digits, any of the digits except the thumb. Thumb has got pollicis, so digits for either of these, and longus means there must be some brevis also. So this is the longus muscle. Peroneus, in the leg the muscles are there. The palmar interossei we can see in the hand. These all are unipinnate. Then moving on to the bipinnate structure, we have got this, and this is the dorsal interossei. We saw the palmar. So two muscles are there adjacent to each other. One is on the palmar aspect, one is a little bit dorsal to it. They are named as palmar interossei and the dorsal interossei. Interossei means between the bones. The bones are there. They are called as metacarpals in this region. Metacarpals के बीच में the muscles are there. They are called as interossei. Then moving on, muscle in the thigh region again. Then the dorsal interossei, which we can see here, peroneus longus, another muscle in the lower limb, and a flexor hallucis longus. So you can again see the nomenclature. Muscle is flexor for the flexor compartment. Hallucis is for the great toe, not the thumb. Thumb is pollicis. For great toe of lower limb, that is the hallucis. And longus means there must be some small muscle of the same category. Flexor hallucis brevis bhi hoti hai. So flexor hallucis longus, that is for our interest, that is bipinnate category. Now moving to the multipinnate structure, a very important muscle. ये हमारे पास अपर लिम्ब की एक मसल है, part of the bone clavicle, then scapula, which has got acromion process and the spine of scapula, and the muscle is subscapularis one muscle, and the deltoid. Deltoid, very important muscle for abduction, and this has got plenty of fibers, anterior, posterior, and the acromial fibers. These acromial fibers of deltoid are basically multipinnate in structure. So these multipinnate structure, which is have by the subscapularis and the deltoid. So you can see throughout various axes, these fibers are arranged. This is a very bulky muscle, deltoid, and we use it for intramuscular injection, as you all must be knowing. Then there is circumpennate muscle also, tibialis anterior. Tibia is the bone of leg. In the same region, we have got tibialis muscles, tibialis anterior and tibialis posterior. So tibialis anterior belongs to this category. It is circumpennate muscle. Okay, tibialis anterior. Now some muscles can be having spiral or twisted fasciculi. We have got these names: trapezius, pectoralis major, latissimus dorsi, and the supinator. These all muscles you will be studying in the upper limb. So you will see from the origin to the attachment how the fibers are getting twisted to get attached, and that will accordingly affect the movement pattern. In certain muscles, the fasciculi are crossed. They are called as cruciate muscles. कभी कभी muscle fibers cross होंगे. So this, because this crossing, it is called as cruciate muscles. Sternocleidomastoid, masseter, adductor magnus. So these all are. So you can see from the name, some of the parts of the name, they are pertaining to the location of the muscle. Some nomenclature of the muscles depending upon the shape of the muscle, and some nomenclature of the muscle depending on the action, adductor, flexor, likewise. And then few differences. एक magnus है बड़ी मसल, एक brevis है छोटी मसल, एक लंबी मसल है longus, एक brevis है छोटी. So likewise, the nomenclature is there. This is the muscle latissimus dorsi having spiral fasciculi. So we were discussing nomenclature. We have got trapezius, rhomboides, then
serratus muscle, serratus anterior, serratus posterior. Accordingly, these muscles are there. Then we have got the number of heads of origin. For example, biceps, triceps, quadriceps. So these all are there. Depending on the biceps is having 2 heads of origin, triceps is having 3 heads of origin, and the quadriceps is there in the lower limb, it is having 4 heads of origin. So 4 heads join to form a belly, and then it's getting attached to a single point. Anyhow, moving on, gross structure. Some muscle is having gross structure as semitendinosus, semimembranosus. Semitendinosus, semimembranosus, they are having partially it is tendon-like muscle. That's why it is called as semitendinosus. Then partially it can be membranous muscle. That's called as semimembranosus. And location-wise, it can be temporalis, supraspinatus, and then can be intercostalis. Supraspinatus above the spine, and intercostalis means in the thorax region between the intercostal spaces. So you can see here, this is the serratus anterior muscle. This muscle connecting the scapula with the thoracic cage. Ribs में attach है एक end इसका और एक end attach है scapula पर. Thus throughout these, and it has got this serratus. You can see this serrated end. जैसे आरी में होता है like this. So this serratus end. That's why this muscle is named serratus anterior. Triceps, quadriceps, as we were discussing, depending on the heads of origin. Semitendinosus. This half of this muscle is tendon-like. Semimembranosus. The half of this membrane is membrane-like, very thin. So that's how the nomenclature is there. These are muscles of thigh, back of thigh. Then plenty of muscles depending on the action. Adductor longus, the adductor muscles. Flexor muscles, flexor carpi ulnaris. Adductor pollicis longus. So that's accordingly abductor pollicis longus. In direction of the fibers, depending on some muscles are having vertically directed. Say for example, rectus abdominis. Some are horizontally directed. In the abdomen itself, transversus abdominis. Class sorry. Then we've got orbicularis oculi. A muscle is there around the eyeball. That is orbicularis oculi. Circularly arranged fibers are there around the eyeball. Then around the oral cavity. Again muscle is there. Orbicularis oris. Oris. So we will study about these muscles and you will see the names in the books also. So this is how the nomenclature is done. It gives you a clue regarding action or shape or direction of fibers. Two bellies, digastric. Neck में muscle होती है. It is called as digastric because it is having two bellies. Digastric, two bellies. And muscle with number of intervening tendons or intersections is the rectus abdominis we saw. So इस तरह से ये digastric muscle है, दो belly हैं और बीच में टेंडिनस पार्ट है. ये ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई. आई बॉल के आईज के अराउंड वी हैव गॉट दिस सर्कुलरली अरेंज्ड फाइबर्स. देन प्लेंटी ऑफ लॉन्ग मसल्स आर देयर, जैसा कि आप पढ़ेंगे लोअर लिम्ब में, व्हिच आर हैविंग these long muscles are having crossing various joints. स्टार्ट हुआ एल्बो के पास या फोराम में और फिर उसने रिस्ट जॉइंट को क्रॉस किया, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट को क्रॉस किया, इंटरफैलेंजियल जॉइंट को क्रॉस किया, प्रॉक्सिमल डिस्टल. तो इन द वे दे आर क्रॉसिंग वेरियस जॉइंट्स. उनको हम कहते हैं डाईआर्थरिक और पॉलीआर्थरिक मसल्स. एंड फ्यू एग्जांपल्स आर फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस. एल्बो के प्रॉक्सिमल से स्टार्ट हुआ है, पूरा फोरआर्म क्रॉस करके, कार्पल बोन्स रिस्ट जॉइंट क्रॉस करके, इंटरकार्पल जॉइंट्स क्रॉस करके, देन इट इज गेटिंग अटैच्ड ऑनटू द मेटाकार्पल्स. फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, अगेन एल्बो से स्टार्ट हुआ है, पूरा फोरआर्म, पूरा रिस्ट, whole of the palm, all the IP joints,
and getting attached onto the distal phalanx. So that's how these muscles are there, called as diarthric or polyarthric muscles. नर्व सप्लाई करती है मसल को मोटर नर्व, और मोस्टली मिक्स नर्व होती है जो सप्लाई करती है, जिसमें मोटर फाइबर 60% है और 40% सेंसरी फाइबर्स। तो दोनों तरह के फाइबर्स होते हैं नर्व में जो सप्लाई करती है मसल्स को, उसके बारे में पढ़ेंगे आप। और जब इस नर्व की इंजरी हो जाती है तो दोनों ही तरह की चीजें चली जाती हैं, सेंसरी कंपोनेंट भी और मोटर कंपोनेंट भी। ये सेंसरी कंपोनेंट डिफरेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू द सेंसरी कंपोनेंट ऑफ द स्किन। ठीक है, स्किन में होते हैं टच रिसेप्टर्स, टच, पेन, टेम्परेचर, दोज ऑल आर देयर ऑन द स्किन। दैट इज एंटायरली डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट सप्लाई है उसकी, उसको हम कहते हैं क्यूटेनियस सप्लाई या क्यूटेनियस इनर्वेशन। जो स्किन को सप्लाई कर रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको हम अलग देखते हैं। ये जो सेंसरी 40% की हम बात कर रहे हैं सप्लाइंग अ मसल, दैट सेंसरी कंपोनेंट इज नॉट फॉर टच, पेन, टेम्परेचर, इट इज देयर फॉर मसल एंड जॉइंट पोजीशन सेंस। व्हाट इज दैट? muscle and joint position sense. We also called it proprioception. इसको हम ये भी कहते हैं proprioception. This is the term used. Muscle and joint position sense. ये क्या बताता है हमें? ये हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेशन लाके देता है कि पर्टिकुलर मसल का एंड या कोई पर्टिकुलर जॉइंट कहां पर है। कहां पर है मतलब जब हम मूवमेंट कर रहे हैं, सो वी कैन परफॉर्म द मूवमेंट्स इवन विदाउट सीइंग, बिना देखे भी हम कर पाते हैं। दैट इज मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। ये जो सेंसरी फाइबर्स प्रोप्रायोसेप्शन की इंफॉर्मेशन लेकर के आ रहे हैं, दैट एनेबल्स अस टू परफॉर्म द मूवमेंट विदाउट सीइंग। हम देख कहीं और रहे हैं और हम कुछ लिख लेते हैं, हम देख कहीं और रहे हैं और हम चल पाते हैं, वी कैन वॉक ऑल टुगेदर। सो दैट इज मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोप्रायोसेप्शन सेंसरी फाइबर्स। सर से कहते हैं ना कि आधा पौन घंटा लगेगा, उसके बाद आते हैं, क्लास ले रहे हैं। ओके, सो दैट इज द थिंग दैट वी आर हैविंग दिस प्रोप्रायोसेप्शन। रिपीट कर दीजिए सर ये स्लाइड। ओके, देखो वी हैव गॉट नर्व सप्लाइंग द स्केलेटल मसल। ओके, मोस्टली उसको हम वैसे तो मोस्टली काउंट करते हैं कि मोटर नर्व है, अगर उसकी इंजरी हो जाएगी तो मसल पैरालाइज हो जाएगी। बट along with that मसल पैरालिसिस के साथ साथ वहां मोटर कंपोनेंट के साथ साथ सेंसरी फाइबर्स भी हैं जो सेंसेशंस लाते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे आप डिटेल में। एक सेंसेशन वो है जो हमने टच, पेन, टेम्परेचर वाली जो स्किन रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, ये है जनरल सेंसेशन। कुछ स्पेशल भी होता है, जैसे कि ओरल कैविटी में टेस्ट की सेंसेशन है, कुछ भी हम खाना खाते हैं वो टेस्ट हमें पहुंचता है, स्पेशल सेंसेशन। स्मेल करते हैं, स्पेशल सेंसेशन इन द नेजल कैविटी। एंड सो आईज के थ्रू हम देखते हैं, पूरा विजुअल पाथवे है, स्पेशल सेंसेशन। ओके, यहां पर जो है जॉइंट्स और मसल्स के एंड पर वी हैव गॉट द सेंसरी फाइबर्स आल्सो, एंड यू कैन सी 60% मोटर है, 40% सेंसरी है, एंड दैट इज गिविंग अनदर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन व्हिच इज द मसल एंड जॉइंट पोजीशन सेंस। इट इज द मसल एंड जॉइंट पोजीशन सेंस। मसल और जॉइंट की पोजीशन मिलती है ब्रेन को कि भाई ये मसल और जो जॉइंट है वो कहां पर है, बिना देखे भी हमको पता है।